Hello, dear children. I'm back. Till now, you have heard, you have read. As a child, when he was 3 or 4 years old, he would go to the beach in California with his father. He would get scared by the might of the huge waves which swept over him and instill a fear in his subconscious mind. A few years later, in his eagerness to learn swimming, he joined a swimming pool where an incident further increased his terror. He was pushed into the pool by another boy and experienced death closely. Now, we should start further. The next I remember, I was lying on stomach beside the pool, vomiting. The chap that threw me inside said I was only kidding. I was only kidding. Someone said the kid nearly died. The kid nearly died. The kid nearly died. But all right, now let us carry him to the locker room. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly, weak in my knees and sick in my stomach. अगली बात जो मुझे याद है कहता है वो ये है कि मैं अपने पेट के बल पूल के किनारे लेटा हुआ था और उल्टियां कर रहा था और वो लड़का जिसने मुझे पानी में फेंका था वो कह रहा था मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था और किसी ने पास कहा ये लड़का तो तकरीबन मर गया था बट कोई बात नहीं अब कुछ नहीं आओ इसे लॉकर में लेके जाएं और बहुत घंटों के बाद मैं घर वापिस आया मैं बहुत डर से कांप रहा था मैं बहुत वीक महसूस कर रहा था मैं आई वॉज शॉक्ड आई वॉज क्राइंग जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा उस रात में खा नहीं पाया कुछ बहुत दिनों तक वो जो डर है वो जो हॉन्टिंग डर है मेरे दिल में बसा रहा थोड़ा सा भी मैं एक्सर्शन करता था तो मुझे वो अपसेट कर देती थी मेरी टांगें कांपने लगती थी मेरा पेट में कुछ होना शुरू हो जाता था मेरे पेट में कुछ होना शुरू हो जाता था I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. उसके बाद मैं कभी पूल में वापस नहीं गया मुझे पानी से डर लगने लगा मैंने इसे अवॉइड करना शुरू कर दिया जब भी मैं इसे कर सका A few years later, when I'd come to know the waters of the cascades, waterfalls, cascades, waterfall को बोलते हैं कैस्केड किसको बोलते हैं वाटरफॉल को बोलते हैं water of the cascades. I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading in the Titan, or bumping river, or bathing in the warm lake on the Got Rock, the terror that has seized me in the pool would come back. और मैं जाना चाहता था तब बहुत सालों के दिनों के बाद 10 सालों के बाद मुझे पता लगा वाटरफॉल के पानियों के बारे में मैं जाना चाहता था उनमें और जब कभी भी मैंने ऐसा किया चाहे मैं टाइटन रिवर में नाव चला रहा था या बम्पिंग रिवर में या मैं वार्म लेक के किनारे गॉट रेक्स पे मैं स्नान कर रहा था वो डर जो उस दिन पूल में मुझे लगा था वो मुझे वापस अपनी ग्रिप में जकड़ लेता था सॉरी चिल्ड्रन इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली और मुझे पूरा का पूरा वो अपने आप में पोजेस कर लेता था माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज मेरी टांगें पैरालाइज हो जाती थी आईसी ऑर्डर वुड ग्रैब माई हार्ट और वो ठंडा डर वो भयानक डर मेरे दिल को जकड़ लेता था मेरे दिल को जकड़ लेता था
This handicap, this handicap stayed with me as the years rolled by. In canals on the main lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing in the Deschutes and Metallus in Oregon, fishing for salmon in the Columbia Bumping Lake, in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating, and swimming. Canoeing होती है स्मॉल बोट्स का. अब कहता है मेरे ये जो हैंडीकैप्ट है मेरे साथ रहा सालों साल चलता रहा मेरे साथ इन कैनोज ऑन द मेन लेक्स. जब कभी भी मैं छोटी नाव पे चलता था मेन लेक में, जब मैं लैंडलॉक सेल्मन, बाश, ट्राउट, मेटलस, ये सब विभिन्न प्रकार की मछलियों के नाम है. सो इन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए. न्यूयॉर्क जाता था, जहां कहीं भी मैं जाता था, वो जो हॉन्टिंग फियर है पानी का मेरा पीछा करता था, और इसने मेरे सारे फिशिंग ट्रिप्स को बर्बाद कर दिया एंड डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग. मेरी जो नाव, मैं जो कैनोइंग की बोट्स की यात्रा करता मुझे पसंद थी, उसे उससे मुझे महरूम कर दिया था. बोटिंग से कर दिया था, स्विमिंग से कर दिया था. हर कोई चीज जो है मैं वो भूल चुका था, हर कुछ मैं भूल चुका था. आई यूज्ड एवरी वे आई नो टू ओवरकम दिस फियर. हर कोई तरीका मैंने अपनाया जो मैं जानता था इस डर को दूर करने के लिए. बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन द ग्रिप. पर मुझे इसने जकड़े रखा. इसने मुझे अपनी ग्रिप में लिए रखा. नहीं, मुझसे नहीं, मैं नहीं निकल पाया इससे. फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न टू स्विम. और अच्छा, फिर मैंने बहुत दृढ़ निश्चय किया 1 अक्टूबर कि मैं एक इंस्ट्रक्टर लूँ, एक सिखाने वाला लूंगा जो मुझे स्विमिंग सिखाएगा और मैं सीखूंगा तैरना. आई वॉन्ट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week. मैं एक पूल पे गया, मैं तरणताल पे गया, और वहां मैंने हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस की. 1 hour each day, 1 घंटा रोज. The instructor put a belt around me, a rope attached to it, a rope attached to it, a rope attached to the belt, went through a pulley that ran on an overhead cable, and he held it on to the end of the rope, and we went back and forth across the hour and hour, day after day, week after week. क्या करता था वो मुझे, उसने मेरे पेट पे एक बेल्ट बांध दी, और उस बेल्ट के साथ एक रस्सी लगी हुई थी जो ऊपर एक पुली से गुजरती थी, जो कि पूल के, वो पुली जो चलती थी पूल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक. और फिर क्या था, वो एक रस्सी का किनारा पकड़ लेता था और हम आगे पीछे इधर बैक और फोर्थ सब तरह पूल में तैरते थे. घंटों, मैंने दिनों, डे आफ्टर डे, हफ्तों मैंने प्रैक्टिस की. On each trip across the pool, a bit of panic seized me. So जब कभी भी मैं एक तैरता था पूल में, एक की तरफ एक छोटा सा डर का टुकड़ा मुझे जकड़ लेता था. कब जकड़ता था? Each time the instructor relaxed his hold on the rope, and I went under some of the old terror returned and my legs froze. और जब कभी भी वो जो इंस्ट्रक्टर है रस्सी को ढीला करता था और मैं पानी में नीचे चल जाता था, तब क्या होता था, वो जो पुराना डर है वो मुझे वापस आ जाता था और मेरी टांगें फ्रीज हो जाती थी. It was 3 months before the tension began to slack. 3 महीने लगे, टेंशन अब धीरे धीरे कम होने लगी. Then he taught me to put my face under water and inhale. तब उसने मुझे सिखाया, ये तैरने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपना मुंह पानी में अंदर कीजिए और सांस बाहर निकालिए.
यही उसने सिखाया कि फेस अंडर वाटर और इनहेल एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर नाक बाहर पानी से निकालिए और सांस अंदर लीजिए। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स, और मैंने ये एक्सरसाइज सैकड़ों दफा रिपीट की, बिट बाय बिट, थोड़े थोड़े टुकड़े करके। आई शेड पार्ट ऑफ दिस पैनिक, मैं इस डर को मैंने धीरे धीरे खत्म किया। दैट सेज मी व्हेनेवर माय हेड वेंट ओवर, वो ये जो डर मुझे जकड़ लेता था जब भी मेरा सिर पानी के अंदर जाता था, जब भी मेरा सिर पानी के अंदर जाता था, तभी तभी next he held me at the side of the pool and held and had me kick with my legs। फिर मुझे वो कहे उसने क्या कहा कि अब ऐसा कीजिए कि इस पूल के किनारे को पकड़िए और अपनी टांगों से पानी में चलाइए। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, हफ्तों में ऐसा ही करता रहा, ऐसा ही करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज, पहले तो मेरी टांगों ने मना कर दिया, हम काम नहीं करेंगी, बट दे ग्रेजुअली, पर धीरे धीरे वो रिलैक्स होती गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं उन्हें कमांड कर सकता था, जब वो मेरी मर्जी पे चलती थी। दस पीस बाई पीस ही बिल्ड, और फिर इस तरह उसने क्या किया, टुकड़े टुकड़े करके मुझे एक स्विमर बनाया। उसने टुकड़े टुकड़े करके परफेक्ट किए, एक एक टुकड़ा करके। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने देखा कि हर पीस परफेक्ट हो गया है, he put them together into an integrated whole, और फिर उसने उन्हें इकट्ठा करके एक इंटीग्रेटेड होल में पूरा कर दिया, जोड़ दिया। इन अप्रैल से, और अप्रैल ने उससे मुझे कहा, नाउ यू कैन स्विम, ड्राइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। अब तुम तैर सकते हो, मारो छलांग और सीधे पुल की पूरी लेंथ को पार करो क्रॉल स्ट्रोक में, क्रॉल स्ट्रोक। कहता आई डिड, मैंने ऐसा ही किया, आई डिड सो, सेड आई डिड सो। एंड द इंस्ट्रक्टर, और फिर इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया था, इंस्ट्रक्टर ने अपना काम पूरा कर दिया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, कहते हैं, अब मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था, मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्टेकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। अभी भी मुझे ये डर था कि अगर अगर मैं पूल में अकेला होऊंगा तो क्या मुझे डर लगेगा, क्या मैं टेरर टेरर स्टिकन हो जाऊंगा। आई ट्राइड इट, मैंने इसकी कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं ऊपर नीचे, आई स्वैम लेंथ द अप एंड डाउन। आई ट्राई टू स्विम अलोंग द पूल, आगे पीछे, आगे पीछे। द वेस्टेजेस, थोड़े से ट्रेसेस ऑफ द ओल्ड टेलर वुड रिटर्न, दैट यस, थोड़े से ट्रेसेस पुराने डर के वापस आए। द टेरर रिटर्न इन स्मॉल पीसेस, स्मॉल ट्रेसेस, बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू द टेरर, पर अब मैं फ्राउन कर सकता था, but now, but now, as he knew how to swim, he faced the terror with confidence. He faced the terror with, कैसे अब मैं फ्राउन कर सकता था, अब मैं टेरर को कह सकता था, trying to scare me, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, well, here's to you, look, देखो मैं तैर सकता हूँ। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ, और फिर मैं दोबारा छलांग लगा देता था पूल में, एक दफा और तैरने के लिए, एक दफा और तैरने के लिए। This went on until July. This went on until July, but I was still not satisfied. But I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left. So I went to Lake Wentforth in New Hampshire, dived up the trek of a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Swamp Island. कहता फिर मैंने क्या, मैं सेटिस्फाई नहीं था, मैं नहीं श्योर था कि टेरर मुझे मुझे डर का से छुटकारा मिल सकता है कि नहीं, मिल गया कि नहीं। फिर मैं लेक वेंटफोर्थ गया, न्यू हैम्पशायर में। मैंने एक ट्रिग आइलैंड से डॉक से डाइव किया लेक में, 2 मील मैं लेक में चला और मैं स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर बाहर आया। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक,
एंड बैक स्ट्रोक, मैंने हर तरह की स्ट्रोक, रास्ते में मैंने हर तरह की स्ट्रोक तैरा, क्रॉल किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक में की, साइड स्ट्रोक में, बैक स्ट्रोक में। ओनली वंस डिड द टेरर, सिर्फ एक दफा वो डर मेरा वापिस आया, व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं उस झील के बीच में था। I put my face under and saw nothing but bottomless water. मैंने अपना मुंह अंदर किया और फिर मुझे क्या लगा कि नीचे अनंत पानी है, बॉटमलेस पानी, जिसका कोई अंत ही नहीं, जिसका कोई किनारा ही नहीं, इतना पानी है। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और छोटे से स्मॉल साइज में पुराना मेरा डर वापस लौटा, पुराने मिनिएचर्स में। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, अरे मिस्टर टेरर, What do you think you can do to me? अब तुम मेरा क्या harm कर सकते हो? This time I ceases, I laughed at the terror and said to it that it could not harm him. What can do to me? Look, I fled, it fled and it swam on. ये भाग गया और मैं फिर तैरता रहा, और मैं तैरता गया, डर भाग गया था. But I had residual doubts. But I had residual doubts. पर अभी भी मेरे थोड़े से डाउट थे. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, और पहले ही जब मुझे मौका मिला मैं वेस्ट की तरफ गया. वन टू द टाइटन टू द कॉन्कॉर्ड मीडोज, फिर मैं टाइटन रिवर की तरफ गया, कॉन्कॉर्ड मीडोज में, मीडोज चरागाहों को बोलते हैं. सो आई रीच द कॉन्कॉर्ड मीडोज, up to the Concord Creek Trail to Meady Glacier, और फिर मैं गया, I walked to the Concord Creek Trail to the Meady Glacier and camped at the high meadow by the side of Warm Lake, and then he camped at the meadow by the side of the Warm Lake. मैंने वहाँ अपना टेंट लगाया, वहाँ कैंप किया, रुका. नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टेप्ड, और अगले दिन मैंने कपड़े उतारे अपने, आई स्टेप्ड, dived into the lake, छलांग लगाई मैंने लेक में, and swam across to the shore and back, और दूसरे किनारे तक गया और वापस आया. Just as Dong Carpon जो हैं एक बहुत ही मशहूर तैराक हुए हैं, बहुत ही मशहूर तैराक हुए हैं, used to do, just as Dong Carpon used to do. I shouted with joy, मैं चिल्लाया खुशी के मारे. एंड गिलबर्ट पीट रिटर्न द इको, और मेरी आवाज, मेरी जो खुशी है वो गिलबर्ट पीक से टकरा के वापस आई. आई कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर से पर विजय प्राप्त कर रही थी, मैंने अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त कर रही थी. द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी. यह एक्सपीरियंस मेरे लिए कहते हैं बहुत ही बड़ा मीनिंग लेके आया. As only those who have known stock terror and conquered it can appreciate it. Sir, वही लोग, because the experience has a great meaning for in my life. I realized that death was peaceful, only the fear of death was fearful. कहते हैं ये सिर्फ वही लोग रियलाइज कर सकते हैं जिन्होंने इस डर को झेला हो और इस पे विजय प्राप्त की हो, सिर्फ वही अप्रिशिएट कर सकते हैं. इन डेथ देयर इज पीस, मौत में तो शांति है. देयर इज टेरर ऑन इन द फियर ऑफ डेथ, और डरते हम किससे हैं? डर के, डेथ के नाम से डरते हैं, डेथ के डर से डरते हैं, हम मौत के डर से डरते हैं. डेथ तो शांति है. As Roosevelt knew when he said, रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा, all we have to fear is fear itself, हम डर से ही डरते हैं. all we have to fear is, रूजवेल्ट क्या कहते थे? रूजवेल्ट कहते थे, रूजवेल्ट has said that all we have to fear is fear itself. Because I had experienced both the sensation of dying, क्योंकि मैंने, because as I had experienced death and the fear of death both, fear death and fear of death both, and the terror that death, the fear of it, और वो डर जो मौत का भय प्रोड्यूस कर सकता है. द विल टू लिव somehow grew in intensity, मेरे जीने की चाहत और तेज हो गई. माई डिजायर टू लिव grew immensely.
And I felt released from fear and was free to walk the trails and climb up the mountains fearlessly. At last I felt released and I brushed aside the fear और मैंने डर को मौत को परली तरफ फेंक दिया मौत को परली तरफ फेंक Now let me tell you the gist of this lesson. जिस विलियम और डगलस की डिजायर थी to learn swimming since childhood. At the age of 3 or 4, he was knocked on and buried by a wave at the beach in California. He developed a great aversion to water. At the age of 10 or 11, he decided to learn to swim with water wings at the YMCA pool since it was safe at the shallow end. Then a misadventure took place. While sitting alone and waiting for others to come to the YMCA pool, a big boy came and threw Douglas into the deep end of the water and threw Douglas to the deep end of the water. Douglas swallowed water and went straight down to the bottom of the pool. While going down, he planned to make a big jump upwards but came up slowly, tried to shout but couldn't. As he went down the pool second time, he tried to jump upwards but it was waste of energy. Terror held him deeply and deeper, more deeper and deeper. During the third trial, he sucked water instead of air. Light was going out and there was no more panic. So he ceased all the efforts and he became unconscious. He crossed into oblivion. वो बेहोश हो गए उन्होंने वो ऐसा लगा जैसे वो मर जाएंगे when when revived he found himself vomiting beside the pool. He was in grip of fear of water and it deprived him of the joys of canoeing, boating, swimming and fishing. He hired an instructor to learn swimming. The instructor taught him swimming piece by piece. He went to he went to different lakes to swim and found tiny vestiges of fear still crept him. He challenged the fear and swam. Swimming up and down the warm lake, he finally overcome his fear of water. He realized death, that in death there is peace and there is terror only in the fear of death. This is what this lesson was, my dear children. And I hope you must have fully enjoyed it. You must have understood it deeply. Now the time has come for the question answer session, and here is my first question to you. Why was Douglas determined to get over his fear of water? Why was Douglas determined to get over his fear of water? Why was Douglas determined? Yes, why? Simple. Because because he loved canoeing, he loved fishing, he loved swimming, he loved going to meadows. How did the instructor build a swimmer of Douglas? How did the instructor build a swimmer out of Douglas? The answer is the instructor made him practice swimming step by step and gradually, piece by piece, turned him into a swimmer. When he had perfected his piece, he put them together into an integrated whole, and here was a Douglas as a swimmer. How did Douglas make sure that he had conquered the old terror? How did Douglas was sure that he has conquered his old terror? How was that Douglas sure that he conquered his old terror? Yes, when he went to the warm lake and he dived out of there and he crossed then he was sure. Only tiny vestiges of his terror returned back, but when he shoot of the terror, he was sure that he could now swim.
and he shouted with joy, and the gulbed pigs returned his shout. Yes. How does Douglas make clear to the reader the sense of panic that crept him at the iron as he almost drowned? Describe in detail that have made the description vivid. That has made the description vivid. Now, think the answer? Correct. The answer is William describes his experience where he had a close brush with death at the YMCA swimming pool. As it, as it is a first person account, he has described it very deeply. The emotional, mental, and physical struggle and the paralyzing fear of drowning has been discussed in detail. William retained William retained his intelligence and had a plan to come to the surface. He tried it, but it didn't work. And after a few trials to save his life, death dawned upon him. All these details make this description vivid. How does Douglas overcome his fear of water? Yes, it's an important question, my dear children. How does Douglas overcome his fear of water? William Douglas was not able to come out of his fear. So he hired a swimming instructor. So he hired a swimming instructor. Once he had learned swimming, he wanted to check if he had overcome the fear or not. He would swim in lakes and found that the fear to return in small phases. William was no longer scared as he knew that he could now swim. Hence, he overcome his fear. Then why does Douglas, as an adult, recount a childhood experience of terror and his conquering of it? What large meaning does he draw from this experience? This is also again one of the most important questions, my dear children. William Douglas gives a detailed description of his childhood experience so that the reader gets familiar with the kind of fear that he had as a child. When he quotes Roosevelt, all we have to fear is the fear itself. He tries to draw a larger meaning from this experience. He wants to highlight the fact that life becomes meaningful and the desire to live grows intense when he had conquered his fear. When he had conquered his fear. My next question is, what is the misadventure that William Douglas speaks out? What is the misadventure which the William Douglas speaks out? Yes. Will you please? Will you please? Will you please? What is the misadventure? William Douglas speaks out. William Douglas speaks out about the misadventure which happened at the swimming pool. When a big boy, when he was sitting on the side of the pool waiting for the other people, a big boy came and said, "Wow, Skinny, like to be drowned." And he lifted him and put him into the water. What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans did he make to come to the surface? Yes, my dear children. Yeah, this is an important question again, and I know you know the answer. And I know that you know its answer. You know its answer. Yes. But even then, let me tell you, since the age of 3 or 4, when the author accompanied his father to the beach, he realized that he disliked water.
What he realized? That he disliked water. He was not liked by him. Water was not liked by him. He disliked water. Is what he realized. Yes, he would get frightened by the power of the waves which threw him, swept over him, and was buried in water. Later, at the age of 11 years, he decided to learn to swimming. He joined the swimming pool classes at the swimming pool at the YMCA. He felt that the swimming pool was safe. Also, the pair of water wings will help him stay on the surface, but more, they instilled a sense of confidence in him. It was just when he had started feeling comfortable that an accident took place. A big boy picked up him and threw him into the pool at the deep end. He got water in his mouth and sank to the bottom. He was frightened. He was frightened but kept his mind working and devised a way but things didn't turn out as planned. His lungs felt as if they were out burst. He was overpowered by the fear. He was overpowered by the fear. Sorry. Reached out as if to grab something but could only get his hands on the water. He got suffocated due to lack of air. Couldn't scream, moved his arm desperately, but all his efforts failed and he once again sank to the bottom of the pool. An unexplainable terror seized him. His limbs were lifeless, rigid due to fear. He couldn't even scream. The only sign of life was his heartbeat. He sucked in water, then suddenly all his efforts to save himself stopped, and he was relaxed, peaceful, fearless, and sleepy, almost dead. It was due to these experiences that the author developed an aversion of water. Next is, how did the instructor वो I have already given the answer. Describe the efforts made by वो बता दी मैंने वो जगह जगह घूमा. So this is all with the lesson by this children. I hope it was an interesting lesson. You must you have understood it. I'm confident about it very well, and now you are in a position to answer every questions out of this lesson. Until next lesson, let me take leave of you. इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई दें।